Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we are going to see next chapter, that is nothing but the serotonin or 5-hydroxytryptamine and related drugs and drug therapy of migraine also. So we have seen autocoids. We have started with the autocoids. We have seen the drug histamine, antihistaminic drugs. After that we have also seen the drugs used in the peptic ulcer yesterday, and today we will see drug used in the migraine. So migraine and serotonin related drugs. Migraine and serotonin related drugs. You can expect at least 2 questions from this chapter. And what is serotonin first? So serotonin is a kind of, again, a amine. It is also a autocoid, which is a self-releasing amine. So present in the variety of tissues. Now this serotonin, or also known as a 5-hydroxytryptamine, this 5-HT or 5-hydroxytryptamine is synthesized from serotonin or 5-HT. Serotonin or 5-hydroxytryptamine is synthesized from one of the essential amino acid. One of the essential amino acid. Essential amino acid. So which one is the essential amino acid? So mostly phenylalanine, tyrosine, right, tryptophan. So they are known as the essential amino acids because they are not synthesized in the body. They must be supplied from the diet. That's why. So this 5-hydroxytryptamine, a biogenic amine or a autocoid synthesized from one aromatic amino acid known as a tryptophan by the enzyme tryptophan hydroxylase. So hydroxylase enzyme will convert tryptophan into the 5-hydroxytryptophan. Now 5-hydroxytryptophan will be decarboxylated. Now there is a hydroxylation first and then there is a decarboxylation to give 5-hydroxytryptamine, and this is a structure of 5-HT. Structure of 5-HT. It is a, remember, it is a indole derivative. Now this 5-hydroxytryptamine is released. It will act on its receptor, and after that there is a metabolism. So 5-HT or serotonin is metabolized by 2 enzymes. First one is a MAO. MAO means monoamino oxidase, and second enzyme is a dehydrogenase enzyme. So MAO will metabolize 5-HT into 5-hydroxyindole acetic acid. 5-hydroxyindole acetic acid. इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. So MAO will metabolize the 5-hydroxytryptamine into 5-hydroxyindole acetic acid, 5-HIIA. 5-HIAA. That is a 5-hydroxyindole acetic acid. Then dehydrogenase will metabolize the 5-HT into 5-hydroxytryptanol. 5-hydroxytryptanol. So in short, जो सेरोटोनिन होता है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से
सिंथेसाइज होता है, tryptophan amino acid is converted into 5-hydroxytryptophan by hydroxylase enzyme, then there is a decarboxylation by decarboxylase enzyme, so 5-HT, right? So we'll see about this. So 5-hydroxytryptamine again is a biogenic amine distributed in the mast cell. कहाँ पे पाया जाता है ये 5-hydroxytryptamine? Present in the mast cell, also in the platelets, and highest concentration of this 5-HT is found in the pineal gland. Pineal gland, because this 5-HT is also precursor molecule for synthesis of melatonin. मेलाटोनिन क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिनियल ग्लैंड. इसके ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. सो दिस 5-HT और सेरोटोनिन और 5-hydroxytryptamine is present in the mast cell, platelets, pineal gland, and also present in the GIT. Also present in the GIT. आपका GI ट्रैक जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसमें भी ये 5-HT होता है. It is synthesized from essential amino acid known as a tryptophan, and this 5-hydroxytryptamine is also known as, याद रखना है, also known as enteramine. Very very important, enteramine. 5-hydroxytryptamine or serotonin is also known as enteramine because 90% of serotonin is localized or present in the intestine. Most of the जो serotonin होता है वो intestine में होता है, इसलिए enteramine उसको बोलते हैं, right? So enteron is the term for intestine. That's why it is known as a enteramine. Remember, enteramine or 5-HT or serotonin, right? Now again, there are different receptors of serotonin. So after synthesis, it will release. After release, it will act on a different receptor. So there are 5-HT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 5-HT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 receptors. Some books have mentioned 7. Now there is a 8 serotonin receptor, and also these receptors subtypes. इनके subtypes भी होते हैं, जैसे 5-HT 1A, 5-HT 1B, 5-HT 1D, like that. So mostly 5-HT 1 के ही subtype होते हैं. Now out of these 8 receptor, 5-HT 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 means except 5-HT 3. Now 5-HT 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 all are the GPCR. The serotonin receptors, they are belonging to family GPCR. 5-HT 1, 2, 3, sorry, 5-HT 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, they are the GPCR. But 5-HT 3, जो 5-HT 3 होता है, that is a ion channel. 5-HT 3 is a ion channel. 5-HT 3 is a ion channel receptor. और इसके ऊपर अभी तक 4 बार क्वेश्चन हो चुका. तो 5-HT 3 is a ion channel, and remaining 5-HT receptors are the G protein coupled receptor, right? को याद रखना है. Now what is the significance of serotonin? इसका रोल क्या है? Significance of serotonin. What is the role of serotonin? So it is a neurohormone in the brain. It is a neurohormone in the brain. So neurohumoral transmission. It is a neurotransmitter released by tryptaminergic neurons. Serotonergic neuron or tryptaminergic neuron involved in the regulation of dumping over activeness due to various stimuli. Dampening of overactiveness to a various stimuli. जो आपको स्टिमुलस आते हैं उसका जो ओवर एक्टिव स्टिमुला है उसको डंपिंग करता है सेरोटोनिन, है ना. रेगुलेट द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. आपको जो कॉन्शियसनेस है वो भी रेगुलेट होता है ना. डिस्टर्बेंस इन द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, सॉरी, डिस्टर्बेंस इन द सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन और
disturbance in the tryptaminergic neuron may leads to disturbance in the sleep. और सेरोटोनिन का जो ब्रेन का लेवल है उसमें डिस्टर्बेंस हो गया तो स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है, एपेटाइट में डिस्टर्बेंस होता है, मूड में डिस्टर्बेंस होता है, सेक्सुअल बिहेवियर में, मोटर एक्टिविटी में, परसेप्शन एंड उसका रिजल्ट है माइग्रेन. So disturbance in the 5-HT level leads to disturbance in the sleep, appetite, mood, sexual behavior and motor activities, perception, and lastly you may suffer from migraine. Now 5-HT मतलब serotonin controls the sleep wakefulness cycle, that is known as the circadian rhythm. Very very important. 5-HT is responsible for the circadian rhythm. Circadian rhythm, very very important. Disturbance in a certain level leads to psychotic disorders. अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स आएंगे जैसे सिजोफ्रेनिया. ओवर एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन लीड्स टू सिजोफ्रेनिया एंड affective disorders. We have already seen antipsychotic drugs. In that you might have seen this. Okay, and disorders related to mood, emotions, reward and memory. So that's why selective serotonin reuptake inhibitors are used in the depression. Serotonin antagonists, they are used in the schizophrenia, mania, different psychotic disorders, right? तो यहाँ पे इन शॉर्ट सेरोटोनिन का लेवल बढ़ गया तो साइकोसिस हो जाएगा, सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया तो डिप्रेशन हो जाएगा. मतलब डिप्रेशन, सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया, डिप्रेशन ज्यादा हो गया तो साइकोसिस. ठीक है. अगेन 5-HT3 receptor is present in the GIT. 5-HT receptor is present in the GIT and stimulation of 5-HT receptor by serotonin increases the peristalsis and also increases the emesis. तो अगर 5-HT3 को रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया सेरोटोनिन ने तो emesis होता है, and that's why 5-HT3 antagonists or blockers are used as an anti-emetic. So 5-HT3 antagonist will prevent the emesis and associated with the anti-cancer drug therapy or radiotherapy. इसके ऊपर अभी तक 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ना. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटी कैंसर और रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड emesis, and for that drug of choice is nothing but the ondansetron. Ondansetron is a 5-HT3 blocker. Ondansetron बाद में आएगा आपको ये. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर केमोथेरेपी इंड्यूस्ड emesis और रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड emesis मतलब उल्टी. 5-HT1 stimulation are related with the migraine. So 5-HT1 receptor present in the brain and stimulation of 5-HT1 related to migraine, which occurs in the certain cranial blood vessels. Activation of these receptor leads to constriction of blood vessels and there is a migraine, right? GIT gastrointestinal tract. GIT में क्या है? Gastrointestinal tract में you have a enterochromaffin like cell ECL or known as the histaminoscytes. So which is a major source of circulating serotonin and it acts as a local hormone over there and are associated with the initiation and maintenance of intestinal peristalsis. वही है कि 5-HT और सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टाल्सिस, इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना. ज़्यादा सेरोटोनिन हो गया तो इमेसिस होता है एंड दैट्स व्हाई 5-HT3 blockers, 5-HT3 antagonist, they are used in the treatment of emesis. Ondansetron, granisetron, domperidone like that. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर सेरोटोनिन क्या करता है? सो इट कॉजेज द वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है.
वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल मतलब किडनी, किडनी की आर्टरी, पल्मोनरी, स्प्लेनिक एंड सेरेब्रल ब्लड वेसल। तो ये इतने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। इट हैज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन ऑन हार्ट। हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट रेट बढ़ता है हार्ट की। प्लेटलेट में क्या है, सर्कुलेटिंग 5-hydroxytryptamine that is serotonin. Circulating serotonin and other mediators they can cause aggregation of platelet and inflammation. प्लेटलेट में क्या रोल है इसका, प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगेन रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स इज आल्सो देयर। सो 5-HT और सेरोटोनिन मैकेनिज्म्स दे आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है ये। कार्सिनोइड सिंड्रोम, देयर इज वन सिंड्रोम नोन एज अ कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या होता है, इट इज अ ट्यूमर, इट इज अ कैंसर ऑफ ECL, enterochromatin like cell, enterochromatin cell or ECL. It is a cancer of ECL of GIT। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा सेरोटोनिन आ जाता है। ट्यूमर ऑफ enterochromatin cells of GIT. Carcinoid syndrome is characterized by intermediate accompanying by hypertension, bronchospasm, colic and diarrhea। यहाँ पे सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और उसके कारण डायरिया, कोलिक, देन ब्रोंकोस्पाज्म है ना, हाइपरटेंशन। सम ऑफ दीज सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन। देखो एक ड्रग है क्लोरफेनारामाइन, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन, along with it ciproheptadine and other drug like methyl sergide is also useful in a carcinoid syndrome. So chlorpheniramine, cyproheptadine, methyl sergide, they are useful in the carcinoid syndrome. Different receptors of serotonin, देखो पहला है 5-HT1 और 5-HT1 receptor ना। So kind of GPCR and inhibition leads to inhibition of adenyl cyclase. Okay, so कहाँ पे होता है, there are है ना। So 5-HT1 जो उसके टाइप भी होते हैं, 5-HT1A, B, D. Okay, 5-HT1 it has subtypes of 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D. Now 5-HT1A is present in the Raphe cell bodies and dendrites of hippocampus. What is the role? To involve in the mood and behavior, anxiety, feeding, thermoregulation, and it is a kind of autoreceptor for regulating the 5-HT in the brain. ये ऑटो रिसेप्टर होता है, रेगुलेट करता है 5-HT का रिलीज। 5-HT1A उसका सब टाइप है 5-HT1B इन द सीएनएस एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल, इसमें ये हुआ था लोकेशन है। रोल क्या है, व्हाट इज द रोल? सो बिहेवियर, देन पल्मोनरी, वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन, ये रोल है। 5-HT1D थर्ड, लोकेटेड इन द on the presynaptic axon terminals in the substantia nigra, basal ganglia and cerebral vessel. Now this is mostly related with the migraine. So kind of autoreceptor which regulate the dopamine release over here, and cerebral vasoconstriction and migraine, that is the result. That's why तो migraine में drug use होते हैं, they are the 5-HT1D antagonist, sumatriptan वगैरह। Now 5-HT2 कहाँ पे होता है, 5-HT2 is a kind of GPCR receptor and activation of this leads to activation of phospholipase C and secondary metabolites, secondary messenger and then effect। 5-HT2A, 2B, 2C ये तीन रिसेप्टर है, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, there are 3 subtype receptors। ये कहाँ पे है, 5-HT2A is present in the frontal cortex of platelet। okay? Frontal cortex platelet पे होता है, स्मूथ मसल ऑफ ANS पे होता है ना। काम क्या है, न्यूरनल एक्साइटेशन, बिहेवियरल इफेक्ट एंड एग्रीगेशन एंड कंट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल। 5-HT2B लोकेटेड इन द गैस्ट्रिक फंडस, क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडस। 5-HT2C कहाँ पे होता है, लोकेटेड इन द choroid plexus in the brain, कहाँ पे है, choroid plexus in the brain।
and what is the role? Secretion of CSF, cerebrospinal fluid. ठीक है. Now 5:3 ये क्या है? आयन चैनल है, लिगैंड-गेटेड आयन चैनल present in the cholinergic terminals of GIT, area posterma and hippocampus of the brain. तो इसका काम क्या है? इमेसिस न्यूरनल एक्साइटेशन. इमेसिस करता है GIT में और न्यूरनल एक्साइटेशन ब्रेन में. 5:4 ये भी क्या है? GPCR है, एक्ट वाया एडेनिल साइक्लिस सेकंड. ये कहाँ पे होता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर colliculus of hippocampus and smooth muscles of GIT, also present in the secretory cells. काम क्या है? न्यूरोनल एक्साइटेशन, पेरिस्टालसिस एंड स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेशन. तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स है, याद रखना है आपको. यहाँ पे 5:1 A, B and D, 5:2 A, B, C, they are the subtype. मतलब 5:T के 3 सबटाइप है. There are 3 subtypes of 5:1, right? 5:1A, 5:1B, 5:1D. There are 3 subtypes of 5:2, like 5:2A, 5:2B, 5:3, 5:2C, right? Right. So same thing given over here. यहाँ पे मैं है ना 5:1 है ना, जैसे देखो 5:1 देर आर 3 सब टाइप्स है ना, जैसे मैंने बोला है कि 5:1A, 5:1B एंड 1D. सो 5:1 इज ऑटो रिसेप्टर, प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर, कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ 5:T, रेगुलेशन कंट्रोल करता है. एंड 5:1BD ये क्या करता है? कॉजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेनियल ब्लड वेसल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेन. इसके कारण माइग्रेन होता है, तो उसको ही ब्लॉक करने का एगोनिस्ट. नाउ 5:1A, 1D. तो 5:1 क्या? एक पार्शियल एगोनिस्ट को है. पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ 5:1A इज अ बसपायरोन, इस्पायरोन एंड जेपीपायरोन. दे आर यूजफुल एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग. 5:1 का एगोनिस्ट एंटी एंजाइटिक ड्रग बोल के यूज होता है. नाउ एगोनिस्ट ऑफ 5:1B, 1D. So agonists are nothing but the sumatriptan and naratriptan. They are useful in the treatment of migraine, acute migraine. 5:1B, 1D उनका एगोनिस्ट है sumatriptan and naratriptan, which are a drug of choice in case of acute attack of migraine. 5:2A, 2C responsible for the most of the direct action of serotonin and इसका modulate the release of serotonin. तो यहाँ पे केटानसेरिन एंड रेटानसेरिन ये दो ड्रग जो है वो एंटागोनिस्ट है. केटानसेरिन, रेटानसेरिन दे आर द एंटागोनिस्ट एंड यूजफुल एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट. क्लोजापिन जो है, रेस्पिरिडोन जो है, दे आर द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है ना, दैट एक्ट थ्रू एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी ऑफ दिस रिसेप्टर. तो जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स जो है वो इसको ब्लॉक करते हैं, 5:2A, 2C को ब्लॉक करते हैं. तो 5:3 रिसेप्टर देखो, 5:3. सो इट इज अ inotropic और ion channel receptor है ना. All other 5:T are the GPCR. So mediators mediate the most of the reflex and indirect action of serotonin. इसका जो एंटागोनिस्ट है लाइक ondansetron, granisetron है ना, tropisetron, they are the drug of choice in case of chemotherapy induced vomiting. और इसके ऊपर अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. 5:4 it is present in the GIT, responsible for the increase in the peristalsis. So agonist of this 5:4 example is hisapride, mosapride, renzapride. They are useful in the treatment of GERD. GERD में ये ड्रग्स यूजफुल है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ 5:T रिसेप्टर्स है. 5:T receptors. Now pharmacological actions of serotonin
क्या क्या है ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या एक्शन है इसके? इट कैन कॉजेज द constriction of majority of blood vessel like kidneys blood vessel, pulmonary blood vessel, splenic blood vessel, cerebral blood vessel. ये cerebral blood vessel, किडनी के blood vessel, आपके spleen के blood vessel को constrict करता है and dilate the skeletal blood vessels. You know, it has a weak inotropic and chronotropic effect on the heart. ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या है? बायफेजिक रिस्पॉन्स है, बायफेजिक रिस्पॉन्स ऑन द ब्लड प्रेशर। इनिशियली ब्लड प्रेशर को कम करता है, डिप्रेस करता है एंड देन इमीडिएटली राइज इन द ब्लड प्रेशर। बाद में सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, मतलब एक्चुअली यहाँ पे ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स है, ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स। इनिशियली डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, देन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड लास्टली सस्टेन डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स। सीएनएस के ऊपर क्या है? स्लाइट स्टिमुलेशन। स्मूथ मसल के ऊपर क्या एक्शन है इसका? सो स्मूथ मसल टोन एंड मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल इज इंक्रीज्ड एंड आल्सो कॉजेज द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। मिसलेनियस एक्शन है इसका क्या? रिडक्शन इन द वॉल्यूम दैट एज वेल एज एसिडिटी एंड पेप्सिन कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसका absorption, distribution, metabolism, elimination. So 5-hydroxytryptamine is metabolized by MAO. We have already seen 5-hydroxy indolaldehyde, and then 2 sequential enzyme will metabolize aldehyde dehydrogenase 5-hydroxy indolacetic acid. Lastly, you will get a 5-hydroxy indolacetic acid, 2-hydroxytryptanol. We have seen इसका यूज क्या है? इट इज नो यूज्ड थेरेपेटिकली इसका यूजफुलनेस नहीं है। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ऑफ दिस 5-HT, so first of all you should understand the pharmacological effect of this. That's why we are taking, right? Now 5-HT agonist classification. 5-HT1A agonist कौन है? buspirone, this is anti-anxiety drug. 5-HT1D agonist कौन है? sumatriptan, that is used in the migraine. 5-HT4 agonist कौन है? 5-HT4 agonist cisapride, mosapride in the GERD. Non-selective 5-HT agonist कौन है ना? lysergic acid diethylamide, lysergic acid diethylamide, it is known as a LSD, है ना? Now drugs used in the migraine. Migraine क्या है? Before migraine क्या होता है? Migraine is nothing but the, so due to the vasoconstriction in the cranium, cerebral vessels they are constricted and there is a pressure in the cranium and that leads to throbbing headache. बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला आपका सिर दर्द हो गया, सिर दर्द हो जाएगा। So throbbing headache which may be either unilateral or bilateral, but most of the cases it is a unilateral. मोस्टली क्या होता है? यूनिलैटरल। एक साइड में आपका सिर बहुत दुखेगा, आप म्हणतो ना अर्ध डोकं दुखते, सो वन साइड हेडेक, यूनिलैटरल, right? Because of the cerebral vasoconstriction. So drugs used in the migraine, some drugs are used to prevent the acute attack. So drugs used to prevent the acute attack, and some drugs are used to treat the attack. So drugs used to prevent the attack, मतलब these are the drugs which can prevent the attack, these are the drugs which can treat the attack. So during the acute attack, so you can use analgesic to treat the attack. Simple analgesic like paracetamol, NSAIDs, आपका जो है ना paracetamol वगैरह, aspirin, metamizole, codeine, then NSAIDs like ibuprofen, naproxen, diclofenac, mefenamic acid. So these are the drugs known as analgesic. Antiemetic drugs also can be used over here: metoclopramide, domperidone, prochlorperazine, promethazine. So these are also antiemetic. Then ergot alkaloids. So in that ergotamine and ergotamine.
सिलेक्टिव 5HT1B 1D एगोनिस्ट, और ये ड्रग बहुत ही कारगर है। तो एग्जांपल है आपका सुमाट्रिप्टान, याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। सुमाट्रिप्टान इज अ सिलेक्टिव 5HT1B 1D एगोनिस्ट। रिजाट्रिप्टान, सुमा, रिजा, नारा, जोल्मी एंड फ्राओ, मतलब सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, जोल्मी ट्रिप्टान एंड फ्रोवा ट्रिप्टान। तो ट्रिप्टान्स जो है दे आर नथिंग बट द selective 5HT1B 1D agonist. They are used in the migraine. ये acute attack of migraine नहीं. Sumatriptan is a drug of choice in acute attack of migraine. Then drug used to prevent. तो अटैक प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग है? पहले तो क्लास देखा है आपने, पहला क्लास क्या है? ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अटैक ऑफ माइग्रेन. दीज आर द क्लासेस ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट द अटैक ऑफ माइग्रेन. दूसरा है आपका ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइग्रेन, मतलब दे आर यूज्ड फॉर द प्रोफिलैक्सिस. ये ड्रग किसके लिए यूज करेंगे? प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज करेंगे. प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या? प्रिवेंशन ऑफ अटैक. सो इन दैट यू हैव प्रोप्रानोलोल. प्रोप्रानोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर. देन विच विल डायलेट द सेरेब्रल ब्लड वेसल. अमिट्रिप्टिलिन क्या है ना? ट्राइसाइक्लिक एंटी रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर आल्सो. देन फ्लुनाराजिन, वेल्पोरिक एसिड, गाबापेंटिन, टोपिरामेट एंड सिप्रोएप्टिन. गाबापेंटिन, टोपिरामेट क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये तीनों, है ना? तो ये जो ड्रग है, ड्रग्स यूज्ड इन द माइग्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है. अगेन नाउ इंडिविजुअल ड्रग्स इन अ शॉर्ट. तो पहला है सुमाट्रिप्टान. कौन सा ट्रिप्टान? सुमाट्रिप्टान. सुमाट्रिप्टान क्या है? इट इज अ इंडोल डेरिवेटिव. It is a selective agonist to the 5HT1B 1D receptor. 5HT1B 1D receptor. 1B 1D. So selective agonist to the 5HT1B 1D receptor causes the vasoconstriction of extracerebral and cranial blood vessel. So it is a drug of choice. It is a drug of choice in the treatment of acute attack of migraine. Drug of choice in the treatment of acute attack of migraine metabolized by MAO-A. Adverse effect है इसके. So feeling of warm or sensation of heat, flushing at injection site, then tingling in the hands. Occasionally can cause myocardial ischemia due to vasoconstriction. The next drug है सिसाप्राइड. ये क्या है? बाइपिरिडिल बेंजामाइड डेरिवेटिव. क्या है? इट इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग. प्रोकाइनेटिक मतलब ये आपका जीआईटी इंपेरिस जो है वो कम कर देगा. तो यूज्ड इन द जीईआरडी, यूज्ड फॉर द जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज. नेक्स्ट है मिथाइल सरगाइड. तो ब्लॉक द एक्शंस ऑफ 5HT ऑन अ स्मूथ मसल. एक्चुअली इट इज अ कंजेनर ऑफ LSD, मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन. यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, आल्सो यूजफुल इन द डायरिया ड्यू टू कार्सिनोइड सिंड्रोम. एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके? GIT इरिटेशन, नॉशिया, वोमिटिंग, साइकोटिक डिस्टर्बेंसेस, वर्टिगो एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन. पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होता है? अगर आपने पोजीशन चेंज किया, जैसे मैं बैठा हूँ अभी नॉर्मल प्रेशर है, अगर मैं लेट गया तो मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. अगर मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरा प्रेशर नॉर्मल है, अगर मैं बैठ गया तो मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. पोस्चरल हाइपोटेंशन, चेंज इन द पोस्चर ऑफ पर्सन लीड्स टू चेंज इन द ब्लड प्रेशर. ठीक है, लाइक दैट. नेक्स्ट ड्रग है आपका सिप्रोएप्टिडिन. साइप्रोएप्टिडिन क्या है? पोटेंट एंटागोनिस्ट टू द हिस्टामाइन एज वेल एज सेरोटोनिन एज वेल एज एसिटिलकोलिन. देखो तीनों को ये एंटागोनिस्ट है, हिस्टामाइन,
serotonin and acetylcholine. It is also anti-convulsant, but उसका therapeutic effectiveness नहीं है उतना, so not used as anti-convulsant. So it acts by stimulating the corticotropin releasing factor, and releasing factor for the hypothalamus. Rapidly increases the weight. ये क्या करता है, आपका जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन वगैरह, उसका जो फैक्टर से रिलीजिंग, उसको रिलीज करता है, और उसके कारण क्या है, ग्रोथ होता है, उसके कारण वेट गेन होता है. सो इट इज यूज टू रिलीव द हेडेक, ऑफ माइग्रेन, used in the prophylaxis of migraine, used in the prophylaxis and treatment of post gastrectomy dumping syndrome, जिसमें पेरिस्टालसिस कम होता है उसमें, used in the carcinoid syndrome, and also used to relieve the seasonal and perennial polynosis, anti-allergic way, used in the certain case of Cushing disease. Cushing syndrome में यूज करता है, Cushing syndrome में जहाँ पे ग्रोथ नहीं होता उसमें. It is an appetite stimulant. Remember, it is an appetite stimulant. आपकी भूख बढ़ा देगा, है ना, आपकी भूख बढ़ा देगा. Ciproheptine. Then next है Pizotifen. So it is an antihistaminic drug and also 5-HT antagonist related to tricyclic antidepressant used in the prophylaxis of migraine and other vascular headaches. Ondansetron क्या है? It is a 5-HT3 receptor antagonist used in the treatment of vomiting due to cytotoxic drug or radiotherapy. Granisetron भी क्या है? उसका एक ड्रग है. Then Allosetron भी सिमिलर ड्रग है. Clozapine क्या है? Atypical antipsychotic drug, act by a 5-HT2A 2C receptor antagonist, act by as a 5-HT2A 2C receptor antagonist. Now next is the again फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन. तो ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, सबसे पहले क्या है कि माइग्रेन क्या है जान लो. व्हाट इज माइग्रेन? तो माइग्रेन क्या है सबसे पहले जान लो. फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन. सो देर आर टू टाइप ऑफ माइग्रेन. फर्स्ट वन इज अ माइग्रेन विथ औरा. बट माइग्रेन क्या है? माइग्रेन इज अ ड्यू टू सेरेब्रल वैसोडाइलेशन, देयर इज अ थ्रोबिंग हेडेक. सेरेब्रल वैसोडाइलेशन, देयर इज अ थ्रोबिंग हेडेक, है ना, थ्रोबिंग हेडेक, यूनिलैटरल बायलैटरल. तो सेरेब्रल ब्लड वेसल डायलेट होने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको सर में दर्द होता है एक साइड में, तो बोलते हैं माइग्रेन. माइग्रेन आर ऑफ टू टाइप. तो फर्स्ट वन इज अ माइग्रेन विथ औरा एंड सेकंड वन इज अ माइग्रेन विदाउट औरा. माइग्रेन with aura also known as a classical migraine. Migraine with aura or classical migraine. दूसरा होता है migraine without aura, known as a common migraine, है ना. मतलब aura मतलब periodic attack आता है, periodic attack. Migraine क्या है? It is nothing but the episodes of a headache which is unilateral or bilateral, known as a throbbing type of headache in quality and exacerbated by physical एक्टिविटी. आप जब एक्सरसाइज करोगे तब आपको अटैक आ सकता है. जब आप इमोशनल हो जाओगे तब आपको अटैक आ सकता है ना. तो जैसे आपने कुछ खाया, जैसे सम फूड आल्सो इंड्यूसेस द अटैक. जैसे फूड कौन सा? तो जैसे चॉकलेट्स, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, दे कैन इंड्यूस द माइग्रेन अटैक. विजुअल स्टिमुलाई आल्सो, सम कलर्स आल्सो इंड्यूसेस द माइग्रेन अटैक. इम्पेंडिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अटैक आ सकता है आपको. एंड रिलैक्सेशन आफ्टर इमोशनल टेंशन. ये सब रीजन है माइग्रेन के लिए. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? देयर इज एबनॉर्मल सेरोटोनिन ट्रांसमिशन. सेरोटोनिन का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है इन सीनस. कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, CGRP, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड released from trigeminal nerve ending plays a very important role in the migraine genesis and other vascular disease, other vascular headache. तो obviously
फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन ड्रग ऑफ चॉइस इज सुमाट्रिप्टन। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सुमाट्रिप्टन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन। अदर ड्रग्स लाइक analgesic like aspirin, paracetamol, codeine, it can be used. Argotamine can be used. Metoclopramide, haloperidol, chlorprezin आपने देखा है। प्रोफिलैक्टिकली, प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन के लिए आपका बीटा ब्लॉकर, there is a propranolol is most commonly used. ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक वेरापामिल एंड एंटी कन्वर्जन लाइक टोपिरामेट, वेल्पोरेट है ना, गाबापेंटिन आर यूज्ड। Methyl Sergide, cyproheptadine, and tricyclic antidepressant they also be used. Ona-botulinum toxin A, ये क्या है? New recently approved drug for prophylaxis of migraine. If headache more than 14 days per month, अगर headache more than 14 days है तो Ona-botulinum toxin A. Topiramate is anti-convulsant drug. Topiramate anti-bleed drug used for prophylaxis of migraine. देखो माइग्रेन मैनेजमेंट, माइग्रेन मैनेजमेंट ड्रग फॉर एक्यूट अटैक कौन से रहेंगे? एक तो आपके एनएसआईडी, पैरासिटामोल और अदर एनएसआईडी। अगर कंट्रोल होता है तो नहीं कंट्रोल होता है तो यू हैव टू गो फॉर ट्रिप्टान्स और अर्गोटामाइन प्लस कैफीन। अगर नहीं कंट्रोल होता है तो यू हैव टू गो फॉर ओपाइडल ड्रग्स, है ना। अगर नहीं होता है कंट्रोल तो फिर प्रोप्रानोल। And for the prophylaxis, propranolol is a drug of choice, beta blocker. Then timolol, nodenolol can be used. Calcium channel blockers are also there. Flunarizine, diltiazem, verapamil, nimlodipine, amlodipine. Tricyclic antidepressants like amitriptyline, nortriptyline, imipramine, they are used. And anti-epileptic drug like topiramate, valproate, gabapentin. Then methyl Sergide, cyproheptadine, clonidine, ketanserin, candisetran. Then botulinum toxin A. These are the drugs used in the treatment of migraine. Now again you can see summary of drug used in the treatment of migraine. Summary of drugs used in the treatment of migraine. देखो यहाँ पे समरी ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो रिसेप्टर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, यूजेस एंड कमेंट। तो फर्स्ट इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट सुमाट्रिप्टन इज अ 5-HT1B1D एगोनिस्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ड्रग ऑफ चॉइस है उसमें, क्लस्टर हेडेक ऑफ माइग्रेन। कमेंट क्या है इसका? शॉर्ट एक्टिंग है एंड मे नीड अ रिपीटेटिव डोज। बसपायरॉन, सेकंड ड्रग है बसपायरॉन। इट इज अ 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप का ड्रग है, पार्शियल एगोनिस्ट यूज्ड एज एंजियोलाइटिक। डेक्सफेनफ्लोरामाइन, इट इज एंटागोनिस्ट टू द 5-HT एंड इट इज एपेटाइट सप्रेसेंट। यहाँ पे याद रखना है एपेटाइट सप्रेसेंट। इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। डेक्सफेनफ्लोरामाइन इज एपेटाइट सप्रेसेंट, भूख कम करने की दवा और वेट लॉस करने के लिए यूज करते हैं। पेशेंट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड फॉर द रिस्क ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एंटागोनिस्ट टाइप के ड्रग देखो, एंटागोनिस्ट में कौन से? साइप्रोहेप्टिडिन, 5-HT2, हिस्टामाइन 1 एंड मस्कर्निक एंटागोनिस्ट है। सो यूज्ड एज एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड यूज्ड इन द कार्सिनॉइड ट्यूमर। केटानसेरिन 5-HT1 एंड 5-HT2 को ब्लॉक करता है। इट इज यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। Also antagonizes the platelet activation, platelet aggregation caused by 5-HT। ondansetron जो है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, एंटी एमिटिक यूज होता है इसमें। अर्गोटाल्कोलाइड में अर्गोटामाइन 5-HT1 पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। अर्गोमेट्रिन अगेन सेम, यूज्ड टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमोरेज, मतलब डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होता है वो प्रिवेंट करने के लिए यूज कीजिए, पोस्टपार्टम हेमोरेज। मिथाइल सर्गाइड
So again 5:2 partial agonist antagonist for used for prophylaxis of migraine, not preferred due to the risk of retroperitoneal and mediastinal fibrosis. पेरिटोनियम में आपके फाइब्रोसिस करता है, right? So this will end your drugs used in the migraine also. So tomorrow morning we'll see again industrial pharmacy and tomorrow evening we'll see microbiology. ठीक है, तो लेक्चर ज्वाइन करते जाओ, अभी एक भी लेक्चर एक भी जन लोग